Hello and welcome students to Mentorsat. So guys, this lecture is in continuation of our budget series. I hope you guys have watched the lecture 1 or the part 1 of the budget session that is 2025-26. मैंने आपको क्लियरली बताया था कि whenever you read this budget document, it is not just only about speech कि आपने सिर्फ speech पढ़ी और उसमें कुछ initiatives आए and you just read about that. No. This document is one of the most important document from which guys you can expect the questions of around 4 to 5 and let me tell you it is not just only confined to budget highlights कि आपको लग रहा है सिर्फ budget highlights हो. No. Again I'm telling you reiterating this fact बाद में मत बोलना बार बार कि सर आप पहले हमें नहीं पता था ये बात हमने नहीं कैसे किया. Again I'm telling you budget का पहला component part 1 was about constitutional provisions. पता होने चाहिए. Question have been asked in polity. Budgetary process. The question have been asked from this aspect. This is what first of all you should know. कि सर budget process का formulation कैसे होता है? Enactment कैसे होता है? Sir, all of this I should know. Then come the second component. That is the trend and analysis. Now I am assuming कि आप में से काफी सारे लोग होंगे जिन्होंने इकोनॉमी पढ़ लिया है. अगर नहीं पढ़ा है तो I am just want to highlight this fact that my economy module is launching on 9th of February. So what happen अगर आपके concepts clear हैं तो उसी के जो trends हैं important trends जिस पे questions बन रहे हैं that is what we are going to cover in this particular session. And then third will be the budget highlights. So guys, this session is about the budget trends and analysis. Let us try to see about those budget trends. See, I hope you remember this. अगर आप गवर्नमेंट का बजट देखते हो, you would be seeing that government budget is divided into revenue and capital. In the first part itself, I told you Article 112 clearly stated that the expenditure shall distinguish on revenue account and from the other type of expenditure. So clearly revenue and other form of expenditure which is capital expenditure. That is why budget जो divided है, it is divided as revenue and capital. Clear? Then under revenue budget there will be receipts and expenditure. Revenue receipts comprises of tax, non-tax. Capital comprises of debt creating capital or non-debt creating capital. हम लोगों अपने डिटेल में देखने वाले हैं अपने मॉड्यूल में. जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, they must be aware about this. Now, if you remember in the part 1, I told you that budget will comprises of 4 type of estimates. Budget will comprise of 4 type of estimates and you can see from the budget at a glance itself. Just try to look at this aspect. Budget at a glance. You see budget estimates of next financial year. Haven't I told you that? Budget estimates of next financial year, revised estimates of current financial year. This is current financial year. Current. This is next. You see, I told you that will be compared with the budget estimates of current financial year. And क्यों दोनों में difference है? Because revised data we are getting it after 8 months or 9 months of data, real data. बजट एस्टिमेट तो क्या है? हम ऐसा करेंगे, इतनी रिसीट्स होंगी, इतना एक्सपेंडिचर करेंगे. And then we also get the actual estimates of previous financial year. Yes or no? This is what the budget at a glance. So first point is budget comprises of 4 type of estimates. Second, just look at the revenue receipt, guys. Revenue receipts of we are expecting. देखो वैसे तो बजट ने क्या किया था करंट फाइनेंशियल ईयर के? They have anticipated higher revenue receipts, but actually कितनी है? कम है. But we are assuming next year that will be more than this, more than the previous year. और इसमें मैंने आपको कहा था टैक्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू. Clear? Capital receipts में there will be recovery of loans, other receipts. These are called non-debt capital receipt. Non-debt means which is not increasing the liability. You can see this. And at the same time look at the borrowing. अब मैं आपको एक पॉइंट यहां भी कोट कर रहा हूं और नेक्स्ट आगे भी बताऊंगा. You see the borrowing requirements have declined. The borrowing in the next financial year, that is in the next financial year 2025-26, it is going to be lesser
as estimated in the last year. As estimated in the last, even you compare it with the revised, even you will find out that borrowing, we are going for less borrowing as compared to the last year. This results into total receipts. Total receipt is revenue plus capital. Clear? आपको खुद ही नोट डाउन करते जाने सर. ओके, दिस इज पॉइंट 1 नोटेड, पॉइंट 2 नोटेड. दीज आर की ऑब्जर्वेशन, की ट्रेंड्स जो आप वेरी डिफिकल्ट you will find out anywhere else, neither in the books, neither in the notes, neither anywhere in the Telegram channel. इसीलिए keep writing such stuff. Third, you see total expenditure. I told you total expenditure will be done on revenue account. Clear? Increasing total expenditure, that is, a revenue expenditure is increasing. Interest payments, you must have seen this idea, and I have already talked in my classes. Interest payment constitute the largest component of expenditure. Interest payment constitute the largest component of expenditure. आगे फिर दिखाऊंगा, डोंट वरी. एक बार दिखाने से थोड़ी नहीं आपको याद हो जाएगा, unless I show you twice or thrice. Then revenue expenditure में I told you there is one item known as grant in aid for creation of capital assets, and then total expenditure on capital account. Now sir, what is this sir? Effective capital expenditure. I'll elaborate later. क्लास में तो मैं बता ही चुका हूं effective capital expenditure क्या होता है. Effective capital expenditure, guys, is the expenditure incurred by the government on creation of capital assets. But this effective capital expenditure is you are spending on the capital account. Clear? तो ये तो काउंट हो ही हो रहा है. This is what you are counting it, that is capital account expenditure. Yes or no? Capital account expenditure plus capital account expenditure. But why is it effective? Because एक ऐसा कंपोनेंट है एक्सपेंडिचर का, there is one more component in expenditure which is not there in the capital account, but that expenditure is being used in the creation of capital asset, that is known as grants for creation of capital assets. This is also used for creating capital assets. तो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करोगे तो ये तो सर ज्यादा है ना. इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर इज more than capital. Just because we are not counting it here, we count it in the revenue account, that does not mean कि हमारा capital expenditure में नहीं होना चाहिए. Effective capital expenditure includes this. इन दोनों को ऐड कर लो आप एक बार. You will find out this value. You see something 42.7 and 112. Just इन दोनों को ऐड करो. If you add both of these, you will get this. 202, 9 plus 9, 18, 2, you will get this only. So effective capital expenditure is capital account expenditure plus grants for creation of capital assets. Yes or no? तो कुछ points तो सर हमारे यहां से clear हो गए, what we have discussed in the part 1. One more thing I discussed at that point of time was regarding demand for grants. We have discussed that demand for grant is mentioned under Article 113 of the Indian Constitution. और सर हमने ये भी पढ़ा है that no demand for grant can be introduced. No demand for grant can be introduced in the house, even in the lower house, without the recommendation of the prior recommendation of the president. That is what sir we have studied. Sir, लेकिन आपने एक और इंटरेस्टिंग चीज बताई थी उसमें, that demand for grant, a single ministry sir can have multiple demand for grant. Sir, can you show us? Just look at this. Ministry of Agriculture and Farmer Welfare. They have 2 demand for grant. Look at Ministry of Chemicals and Fertilizers. How many demand for grant they have? One ministry can have single demand for grant also. Single department, this Department of Atomic Energy, they can also have single, like even a single department without a ministry, they can also have a demand for grant. Clear? So this is what one thing I told you in the part 1. दूसरा मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी डिमांड फॉर ग्रांट होंगे सर उसमें 4 टाइप के एस्टिमेट्स होंगे. अगेन जस्ट लुक एट दिस. Budget estimates of current financial year, revised estimates of current financial year, budget estimates of current financial year, actual estimates of previous financial year. Yes or no? Lastly,
मैंने आपको एस्टिमेट्स बताया था कि दैट एक्सपेंडिचर एस्टिमेट्स विल बी डिवाइडेड और क्लासिफाइड इन टू टाइप्स. वन टाइप, you have to tell me the expenditure estimates in revenue and capital. Yes or no? Article 112. Article 112 ये भी बताता है that expenditure should also be classified based upon charged and non-charged. Just look at this. Charged, which means no voting. दूसरा non-charged means voted expenditure. So जो चीजें हम पढ़ते हैं, when you see this, let me tell you, this is how you build confidence for clearing prelims. I hope चीजें आप लोगों के लिए सब क्लियर हो रही हैं. क्लियर? सो दिस इज डिमांड फॉर ग्रांट जो हमने पढ़ा था. नाउ लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द ट्रेंड 1. सर हमने टोटल रिसीट्स तो पढ़ ली. दैट ओके सर, टोटल रिसीट्स इज रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स. सर हमने टोटल एक्सपेंडिचर भी देख लिया. क्लियर? सो अब सर हम टोटल रिसीट्स एंड टोटल एक्सपेंडिचर की जब हम बात करते हैं, सर थोड़ा सा मुझे आप बताइए, टोटल रिसीट्स में विच रिसीट कॉन्स्टिट्यूट द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन टू द गवर्नमेंट रेवेन्यू. अब आप एक बात और समझने की कोशिश करो. दिस इज हाउ वी आर नोइंग कि फ्रॉम वेयर रुपी कम्स फ्रॉम विच सोर्सेस. रुपीज कम from which sources? Let us see. The first source, guys, then the highest source is income tax. क्या ये सही चीज है? ऑनेस्टली तो मैं बताऊं, इनकम टैक्स बीइंग मोर देन कॉर्पोरेशन टैक्स इज नॉट अ गुड थिंग. बट क्या करें, इनकम टैक्स इज द हाईएस्ट सोर्स ऑफ मनी व्हिच गोज टू द गवर्नमेंट. अब आप सोच रहे होगे सर वहां पे आप बोरोइंग क्यों नहीं देख रहे हो? सर इवन बोरोइंग, सर यहां पे 24 है. लेट मी टेल यू गाइस, बोरोइंग इज नॉट कॉल्ड एन अर्निंग ऑफ द गवर्नमेंट. यस, रिसीट है. Borrowing is a part of, borrowing and other liability is a part of debt creating capital receipt. I'm not denying that. But is it an earning of the government? No. ये जो earnings है of the government, this is known as earnings of the government. Earnings of the government is divided into three types of receipt. Earning of the government is divided into three types of receipt. One is tax revenue, second is non-tax revenue, and third is non-debt capital receipt. Again, I'm telling you, first is tax revenue, second is non-tax revenue, and third is non-debt capital receipt. Clear? So that is why, अगर मैं आपसे पूछूं, sir, please arrange the following receipts or following earning of the government in the decreasing order. Highest one is income tax. Second, GST is the second component. Followed by corporation tax, that is third. Honestly, this trend which you are seeing, income tax followed by GST followed by corporation tax, is not a good thing. GST का component जो है, it should not be, मतलब नहीं होना चाहिए. बाकी तो देखो, income tax is more than GST, it is fine, because income tax is a direct tax, और direct tax क्या होते हैं? Progressive. So basically you are taking more money from whom? From the rich. That is how the redistribution objective can be achieved. Clear? But एक time होता था कि corporation tax used to be one of the highest component. So remember, the top three earning for the government is income tax, followed by GST, followed by corporation tax. इसके बियॉन्ड भी आपको याद रखना है तो आप याद रख सकते हो, नो इश्यूज. जनरली इसमें कंफ्यूजन होता है कस्टम और यूनियन एक्साइज पे. क्लियर? तो याद रखना, यूनियन एक्साइज कॉन्स्टिट्यूट मोर, इसको मैं ग्रेटर देन लिख लेता हूं, ग्रेटर देन नॉन टैक्स रेवेन्यू. क्लियर? ग्रेटर देन यूनियन एक्साइज ड्यूटी, ग्रेटर देन कस्टम, ग्रेटर देन नॉन डेट. दिस इज हाउ 1 रुपी कम टू द इकोनॉमी. तो ये तो अर्निंग्स हो गई, और इतनी अर्निंग प्लस आपको इतना बोरो करना पड़ेगा, इतना बोरो करना पड़ेगा. एंड जब आप इतना बोरो करोगे, देन वेयर द रुपी इज स्पेंट, रुपी गोस टू, दैट इज व्हाट इज द एक्सपेंडिचर आइटम. जस्ट लुक एट दैट, वेयर द मनी इज गोइंग. यू सी, इंटरेस्ट पेमेंट गाइज is the largest component of expenditure. Interest payment.
क्लियर? यस, दिस इज डिफरेंट. ये क्या है? स्टेट्स शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज. दिस इज एक्चुअली, आप जब आप पढ़ते हो फाइनेंस कमीशन, यस और नो, फाइनेंस कमीशन जब आप पढ़ते हो तो वहां पे आपको क्या बताया जाता है? दैट द स्टेट, like this much 42% of the center's revenue will be devolved to the state, yes or no? So that share, state share of taxes and duties, that is 22 paisa out of 1 rupee. अगर गवर्नमेंट 1 रुपया खर्च कर रही है तो उसमें से 22 पैसा स्टेट का शेयर है, एक्चुअली में उसके स्टेट का शेयर है, ये मान के चलो. क्लियर? But when it comes to expenditure items, interest payment is the largest component on the expenditure item, followed by central sector schemes. Central sector schemes. बाकी भी छोटे छोटे देख सकते हो, finance centrally sponsored schemes, other expenditure on PSUs and all, pensions, finance commission, major subsidy, defense में कितना है? 8 only. So 8 पैसा is being spent on centrally sponsored scheme, finance commission, defense, like that. But what is the largest component of expenditure? Interest payment. Clear? स्टेट शेयर को भी अगर देखो दिया है ऑप्शन में, तब आप स्टेट शेयर लिख लो कि अच्छा हाँ 1 रुपए में से सबसे ज्यादा स्टेट शेयर है. बट वैसे इन जनरल अगर एक स्टेटमेंट आती है दैट इंटरेस्ट पेमेंट्स इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट, यू विल से यस. व्हाई आई एम टेलिंग यू? बिकॉज ये माना जाता है दैट द वन, नॉट 1 रुपी, दैट इज हाउ मच? 76 पैसा. So 76 paisa which government is earning, 22 is the share of the state only. They have to give. That is they are not doing a kind of an expenditure. Let me tell you, they are not doing a kind of expenditure. That is the state share itself. कि वो जो 76 पैसे आया, 76 पैसा आया है, out of that 22 belongs to the state only. So they have to give it. That's it. It is not considered as such expenditure. नहीं इसको consider करते. Again I am telling you. क्लियर? बस ये तो क्या मैं यहां पे आपको क्या बता रहा हूं, रुपी गोज टू, कि 1 रुपया अगर जो आया है तो वो कैसे जा रहा है. दैट इज वाई ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आपको कई बार मिलता है. ठीक है? सो दैट लाइन, रिमेंबर दैट इंटरेस्ट पेमेंट्स इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड हाईएस्ट सोर्स इनकम टैक्स इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू अर्निंग टू द गवर्नमेंट. Then you see, I told you there are government, if I talk about, there are 3 sources of government earnings. One is center's net tax revenue. Just look at the center net tax revenue, which is mainly direct and indirect. Then you have non-tax revenue. We have discussed in the classes, non-tax revenue comprises of fees, charges, penalties, or the services provided by the government, economic, social, cultural services. Clear? Then the grants आप ये देखो यहां पे आपको सब दिखेगा नॉन टैक्स रेवेन्यू में. इंटरेस्ट रिसीट्स, डिविडेंड एंड प्रॉफिट. डिविडेंड जैसे आरबीआई जो डिविडेंड ट्रांसफर करता है गवर्नमेंट को, दैट फॉल अंडर दी नॉन टैक्स रेवेन्यू. ग्रांट्स, ऑल ऑफ दीज आर बिलोंगिंग टू नॉन टैक्स रेवेन्यू. नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स में जैसे डिसइन्वेस्टमेंट और रिकवरी ऑफ लोन्स, यस और नो, ये सब चीजें इसमें आती है. तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट सेंटर्स टैक्स रेवेन्यू, सेंटर्स नेट टैक्स रेवेन्यू हैज almost increased in absolute terms. Try to remember that. क्योंकि मैं भी आपको एक और फैक्ट दूंगा दूसरे तरीके से, तो वहां पे वो गलत निकलेगी. Just try to understand, center's net tax revenue has likely to increase, or has increased in the last 10 years. Has increased in the last 10 years. Clear? And this is what you can see, the total receipt. Total receipt, has it seen a consistent increase? No. This 1 year, the government receipts declined. This 1 year government receipts declined. तो अगर मैं बोलूं the government total earnings has seen a consistent increase in the last 10 years, that statement is false. Not consistent. 1 year it has seen a decline. You can see that. Clear? And I told you here, if you look at the receipts, one receipt of the government is revenue, and in that tax revenue, one is corporation tax, another is income tax. Clear? Wealth tax and commodity transaction tax, not more.
that is kind of nothing, no value. Custom, union excise duty, I told you union excise duty is more. Then service tax, not applicable. Then you have GST, clear, we have discussed that income tax followed by GST, then followed by corporation tax. Clear? All of these things like that. ठीक है? Capital receipts में non-debt receipts, you can see that. This is what about the net receipts of the center. Now, so in the net receipts, we have seen that one of the major source of government earning, all of these are three are the government earnings. You can call it as government earnings. Clear? Especially mainly ये से ना, these are called government earnings. But you look at these tax receipts of the center. I told you the center's net tax revenue, that is more. Yes or no? जो सेंटर का नेट टैक्स रेवेन्यू, दैट इज एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मेजर चंक ऑफ द टोटल रिसीट्स. So that's why, and that tax revenue is divided into two, direct and indirect. Ideally हमें पता है, if we want to achieve our goal of redistribution, or if we want to achieve our goal of minimizing income inequality as enshrined in the DPSP, for that we have to adopt a system जहां पे क्या होना चाहिए, progressive taxation होना चाहिए. Progressive taxation. That means higher income people should be paying more tax as compared to the lower income people. Clear? चलो ये बात भी आपकी क्लियर है. तो सर हमें तो ये पता है कि जो डायरेक्ट टैक्सेस है, दे आर प्रोग्रेसिव. सो देयर बाय सर अगर टोटल टैक्स रेवेन्यू जो भी है, सर डोंट यू थिंक डायरेक्ट टैक्स शुड कंट्रीब्यूट मोर? होना तो यही चाहिए इफ वी वांट टू अचीव अवर गोल ऑफ redistribution. Let us see here. You see, this is the goal. This is the tax to GDP ratio. How this tax to GDP ratio, you can see it has witnessed a decline in these 2 years. So thereby, is tax to GDP ratio, has it consistently increased? Has it consistently increased? No, it has not consistently increased. Clear? It has not consistently increased. Even you see drop here. Second, what is the tax to GDP ratio? 12%. Sir, how is it as compared to the other economies? It is lower as compared to our target. Target tax to GDP ratio is 23%, which we are seeking for. Then, sir, next is, sir, ideally direct tax should be contributing more than indirect tax. Yes, you can see this. This is what direct is more than indirect. Yes or no? So this direct should be more than indirect. Sir, has it there been an exception? क्या कोई exception था? Look at these years. Yes or no? This year was one year where there has been an exception, 2020-21. Plus, look at this 2016-17. और ये क्यों है? Because in both the years some events happened. What happened in 2020-21? COVID. तो ऑब्वियसली इनकम तो अफेक्ट होनी है, तो डायरेक्ट टैक्सेस में सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन, वेदर यू टॉक अबाउट कॉर्पोरेशन टैक्स आल्सो. बट जीएसटी तो चल ही रहा था. 2016-17, why is it so? Possibly because of demonetization. Clear? So somehow you will find out that in the trend 3 tax receipts of the center, in that 2-3 things we have learned. One, tax to GDP ratio has not seen a consistent increase. There was a drop in 2 to 3 years with respect to tax to GDP ratio. Second, direct tax has generally been more than indirect tax. Generally been more than indirect tax in the most of the years. But has it been always, direct tax, has it always been more than indirect tax in the last 10 years? No. You can see that. ठीक है? अगर 5 साल की भी बात करें तो anticipating तो 5th year start हो जाता है यहां से. If you include this, तो 5 साल में तो yes, we are able to see. But 10 years में no. Clear? Now, once we understood the receipt part of the government, receipt, that through where the receipts are coming to us, revenue receipts is the more, and in the revenue, direct tax is constituting more. Yes or no? और सर अगर rupee comes from, if I am talking about rupee comes from, सर तो rupee comes from में हमने देख लिया कहां से सर मेजरली आइटम्स आ रहे हैं, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, जीएसटी. यस और नो? तो वी हैव सीन दोस आइडियाज. तो ये तो अर्निंग हुई. But what about the expenditure?
नाउ सर एक्सपेंडिचर तो आपने पढ़ाया है क्लासेस में कि सर एक्सपेंडिचर विल बी ईदर रेवेन्यू और कैपिटल, यस और नो? सर आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्लियरली बताया है दैट इट इज जनरली अ कंजम्पशन और मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर एंड इट इज नॉट एसोसिएटेड विद द क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स एक्सेप्ट वन आइटम, और वो कौन सा आइटम है? ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, यस और नो? Clear? On the other hand, when I talk about the capital expenditure is associated with that. Clear? Capital expenditure is associated with the creation of capital assets. बहुत बढ़िया सर, लेकिन इसमें से कौन सा ज्यादा होता है? How many times guys I have told you that revenue expenditure is much more than the capital expenditure, yes or no? इवन मैंने आपको बोला टोटल एक्सपेंडिचर अगर आप निकालोगे उसमें से ऑलमोस्ट 80%, 80 to 82% रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मिलेगा. लेट अस सी फ्रॉम हियर. दिस इज योर इफेक्टिव, अगेन आई एम टेलिंग यू, ये वर्ड इन्होंने देखो कितना बढ़िया यूज किया, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, एंड दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. क्लियर? टोटल एक्सपेंडिचर इज 14.2%. निकाल के देख लेते हैं, 10 10 डिवाइडेड बाय 14.2. देखो रेवेन्यू में इन्होंने ये जीआईए कैपेक्स हटा दिया है, दैट द ग्रांट्स व्हिच आर गिवन फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स. सो इसको 10 बाय 14 ले लेते, मल्टीप्लाई बाय 100. क्लियर? सो समथिंग कितना बना? 14 7 4 28. So now you see this is a very significant development. 7, so something around 70%. But when I'm taking revenue expenditure other than this, अगर मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला ये जो पार्ट है, ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट, अगर मैंने ये इंक्लूड कर लिया, अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर मैंने ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स इंक्लूड कर दिया तो ये बढ़ जाएगा. तो सर ये है कितना, हमें कैसे पता? अभी आपको मैं एक बार ना थोड़ा सा और बताता हूं. जस्ट लुक एट दिस इज 1.2% ऑफ जीडीपी. क्लियर? दिस इज 1.2% ऑफ जीडीपी. तो फॉर 14.2 में, सॉरी 9.8 में अगर 1.2% आप आपने और कर दिया, दिस विल कम आउट टू बी 11. यस और नो? 1.2 और ऐड कर दिया तो 11 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 100. तो 14 7 4 28, 2 here 98, so almost 7, so 77 80%, it will 77 78%. So my whole point which I am trying to convey here कि revenue expenditure constitute more than 50% of the total expenditure, अगर ये statement है. yes or no? capital expenditure 4.3 में से 1.2 माइनस कर दो, so it will come out to be 3.1. और ये देखो हम अभी जो नेक्स्ट वाले में आएंगे वो है भी उतना. दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, दिस इज ग्रांट्स, और इन दोनों का मिला के बना है इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर. क्लियर? सो देयर बाय वो भी आएगा, लेकिन करेंटली हाउ मच दिस कैपिटल एक्सपेंडिचर इज कॉन्स्टिट्यूटिंग, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहता हूं. 2013-14 वाला पीरियड है व्हेन कैपिटल एक्सपेंडिचर यूज्ड टू बी अराउंड, आई वुड से 10% of the total expenditure. 10% of the total expenditure, or 11-12 years. No, today capital expenditure is something around 19 to 20% of the total expenditure. So can you imagine, this trend has increased. The share of capital expenditure as a percentage of the total expenditure has increased. This line is not there even in the curve, that the share of capital expenditure as a percentage, no, as a percentage of total expenditure, it has increased. Clear? This is something you need to remember. On the other hand, अगर आप एक बार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर निकालना देखना चाह रहे होगे अदर देन जीआईए कैपेक्स, you would find out that this revenue expenditure, if you remove that component, grants for creation of capital assets, you just see that it is almost on a declining path. So isn't it a good thing? Yes. Clear? Now, in the total expenditure, we have seen it could be revenue plus capital. Sir, revenue में एक component आएगा, revenue expenditure exclusive plus grants for creation of capital assets. Clear? Plus capital expenditure. Sir, if you add both of these, this can become effective capital expenditure.
Yes or no? Let's try to know a little bit more about effective capital expenditure. क्योंकि सर ये जो एक्सपेंडिचर है, दिस एक्सपेंडिचर तो आई नो फ्रॉम यू वेरी वेल दैट दिस इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर. Yes or no? This is consumption expenditure or maintenance expenditure. Chalo. Let us see here. So effective capital expenditure is capital expenditure plus grants for creation of capital assets. Clear? Now you see, this is capital expenditure. Just look at this. Capital expenditure is seeing a consistent increase. This is in percentage of lakh crore, absolute number. Look at this grants in aid for creation of capital asset. Just look at that. Even that has been increasing. Thereby, you would find out that effective core capital expenditure is increasing. Clear? This capital expenditure graph is also there, but this is in percentage of GDP. So what is the total effective capital expenditure as a percentage of GDP if something comes? You can remember as 4.3% of GDP. This is the data you need to remember. Clear? Has it consistently increased as a percentage of GDP? और देखो दो चीज होती है. In absolute number, you can see that effective capital expenditure has seen a consistent increase in absolute. But when it comes to GDP, effective capital expenditure has not been consistent as a percentage of GDP. As percentage of GDP has not seen consistent increase. Yes or no? Any doubt here? So this is one part about the expenditure. Now, when I talk about revenue capital expenditure, this is fine. But even the expenditure is also classified in different ways. The other way is classification of the expenditure, government expenditure, into these 6 categories. In which one is establishment expenditure. This establishment expenditure is mostly likely to be revenue expenditure, which includes like salaries, allowances, pension, like establishment, that for the working of an establishment. Then you have central sector schemes, centrally sponsored schemes, other central sector expenditure that goes to whom? CPSUs and all that other aspects. Finance commission grants, like that. This is one way of other classification. You can see that. Clear? And you can see the largest component of the government expenditure goes to this and this. This is also one component, but central sector schemes play the major role. Lastly, another way of looking at expenditure from the ministry perspective, that which ministry or which item has got the major expenditure, that is defense. Defense, the government is spending highest on the defense, followed by rural development, second item, followed by home affairs, followed by agriculture, followed by education. तो ऐसे आपको याद रखना है top 5 items in this. If I talk about top 5 items or expenditure of major items, that is defense, rural development, home affairs, agriculture, allied and education. Clear? Lastly, I told you that government also provides certain transfers to the states and UTs. अगर आप लोगों ने fiscal federalism अच्छे से पढ़ा हुआ है, so you must be aware of the concept of fiscal federalism, that center transfers resources to states. That the center transfers resources to states. This is center. It transfers resources to states. Why? So that it can deal with the vertical imbalance. It can ensure that there is no vertical imbalance. Why? What is vertical imbalance? कि majorly अगर आप responsibilities देखोगे ना, list 2 में available है, state list में. Major responsibilities. Health, education, all the concurrent में. Sanitation, drinking water, you'll find out that has been given in the state list. But when it comes to the revenue, that is majorly power. The revenue power is with the center government. Income tax, corporation tax, excise duty, custom duty, यही तो सब पढ़ रहे हैं. तो सबकी मेजरली कहां है वो? सेंटर के पास है.
So this is what an imbalance it is. Responsibilities is with whom? With the states. But revenue is with whom? With the center. So that is why what happened. This is a called vertical imbalance. At the same time, horizontal imbalance भी है. Horizontal imbalance क्यों है? Because certain states they have good revenue, certain states they are very backward. इस imbalance को करेक्ट करने के लिए फाइनेंस कमीशन बनी है. एंड फाइनेंस कमीशन जब अपने रिकमेंडेशन देती है, तो फर्स्ट रिकमेंडेशन इज फ्रॉम वर्टिकल, दैट इज टैक्स डिवोल्यूशन, दैट हाउ मच मनी शुड बी डिवॉल्व्ड, टू द स्टेट्स. सो 15th फाइनेंस कमीशन बता रहा हूं. 16th गाइस, आई एम प्रीटी श्योर आपको पता होगा, 16th फाइनेंस कमीशन हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड. उसके रिकमेंडेशंस इसी साल आएंगे, बिकॉज इट विल बी इंप्लीमेंटेड फ्रॉम 2026 ऑनवर्ड्स. क्लियर? सो 15th फाइनेंस कमीशन गाइस, 15th फाइनेंस कमीशन का लास्ट ईयर है, ये आपको पता होने चाहिए. 15th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेड 42% devolution, 41 plus 1% for the UT of J&K, but 41 will be distributed among the states. So that is what I was talking about, state share of tax and duties. तो सर ये जो आप जो बात कर रहे हो टैक्स डिवोल्यूशन, इसमें कौन कौन से टैक्सेस आते हैं भैया? यही तो सब डिटेल्ड है जो हम मॉड्यूल में पढ़ेंगे अपने इकोनॉमी मॉड्यूल में. And that module is starting from 9th of February. Again, I'm telling you that fact. Clear? So this tax devolution which I'm talking about, 15th, like that 15th Finance Commission, जिसमें it recommended 42% devolution. 42% devolution, 41 to the states, 1% to the UT. तो ये तो हो गया एक method through which the center transfer funds to the states. Second method is through the finance commission grant itself. finance commission grants भी देता है, and this is under article 275 clause 1. Statutory grants. I'm not going to elaborate that aspect right now. Third, center also transfer funds to the state under various schemes. और वो schemes कौन सी? Central sector schemes, centrally sponsored schemes. Under all that, the money is transferred to the state. Clear? So you see, इसमें से सर अब जो states का जो ट्रांसफर है, सबसे ज्यादा शेयर कहां से आता है? सबसे ज्यादा शेयर आता है टैक्स डिवोल्यूशन से. You can see here, devolution, followed by scheme and related transfers, and third is finance commission grants. finance commission grants, जैसे बहुत तरीके के grants होते हैं. एक आपको अंडर आर्टिकल 275 क्लॉज 1 होता है. क्लियर? दूसरा ग्रांट्स टू लोकल बॉडीज, अर्बन लोकल बॉडीज, सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स. सो स्टेट फाइनेंस कमीशन रिकमेंड वेरियस टाइप ऑफ ग्रांट्स. सो दैट इज वन. सो दिस इज हाउ यू सी द सेंटर प्रोवाइड्स finances to the states. Clear? In this it is, these two are based on the recommendation of finance commission. This is, you can say, based on the Ministry of Finance itself. Clear? So this is what about the expenditure profile जो हमने देखी. हमने receipts देखे, हमने expenditure देख लिया. अब जितनी कमाया, receipts बनाई और expenditure ज्यादा किया. If expenditure is more than our earnings, that will be leading to deficit. अब सर अगर मेरा revenue expenditure is more than, if revenue expenditure is more than revenue receipts, सर उसको हम कौन सा deficit बोलते हैं? Revenue deficit. Yes or no? लेकिन हमने एक और टर्म निकाला है effective revenue deficit, in which what we do कि हमने टोटल बोला revenue expenditure except that grants for creation of capital assets. अब वो हटा दो, minus revenue receipts, sir, that will be effective revenue deficit. Clear? Then you have fiscal deficit, total expenditure, revenue plus capital, minus government earnings. Which are those government earnings? That is revenue receipts, revenue, that is tax revenue, non-tax revenue, and non-debt capital receipt. Borrowing हमारी receipt तो है, but earning नहीं है. Yes or no? So thereby fiscal deficit is that. और उस फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस करते हैं हम लोग बोरोइंग से, मेनली बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज से. इसीलिए ये बोला जाता है दैट फिस्कल डेफिसिट रिफ्लेक्ट्स
the borrowing requirement of the government. It reflects the borrowing requirement of the government. Clear? तो अगर आप देखोगे, you can see how this deficit got increased in 2020-21, which is pretty obvious, and from then somehow the deficit are increasing. This is, we say that we are moving towards a path of fiscal consolidation. Path of fiscal consolidation, where the deficit is continuously decreasing. Clear? Fiscal deficit, अगर आप ट्रेंड देखोगे तो fiscal deficit is greater than revenue deficit. Isn't it logical? Clear? And this is greater than primary deficit, and सबसे minimum है effective revenue deficit. ठीक है? This is how the trend is. You see, effective revenue deficit is about to get zero, and that is the actual thing we wanted. That effective revenue deficit should be eliminated. Why is it so? Because our receipts, if we are not able to finance our consumption expenditure through our earnings, then that's a wrong sign. क्योंकि अगर effective revenue deficit है, that means we are not able to meet our consumption needs. We have to borrow to meet your consumption. And is it a good thing? No. So effective revenue deficit should be zero, and it is almost going to be zero in the possibly in the next budget. Let us see. So this is different type of budget deficit. अब ये जो डेफिसिट हुआ है, फिस्कल डेफिसिट, उसको फाइनेंस कैसे करोगे? हाउ विल यू फाइनेंस? एंड वी हैव डिस्कस्ड दैट फाइनेंसिंग ऑफ द फिस्कल डेफिसिट इज नोन एज डेफिसिट फाइनेंसिंग. और हमने क्लास में बहुत बार पढ़ चुके हैं सोर्सेस ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग, जिसमें सबसे बड़ा जो सोर्स है that is market borrowings. So you can see here the sources of deficit financing. Clear? And in that, this market borrowing is the largest source. Market borrowing is the largest source. Clear? You can see that. Market borrowing is the largest source. Followed by securities against small savings. Clear? Followed by this others. But आप ये देखो, जो मेरा एक होल पॉइंट है, एक्सटर्नल डेट. मैंने आपको जब डेट बता रहा था गवर्नमेंट का, आई टोल्ड यू देयर ऑल्सो कि जो गवर्नमेंट का डेट है, 95% ऑफ द डेट इज इंटरनल. क्योंकि जो गवर्नमेंट है, इट मेनली बोरोज फ्रॉम द डोमेस्टिक सोर्सेस. और अब यहां पे फिर देखो, मेजरली मार्केट बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग इस साल कुछ है ही नहीं. सिक्योरिटी, दिस इज द सेकेंड पोर्शन, ये भी कुछ ज्यादा नहीं. This is also not much. This is, you see, hardly it is there. Hardly. So external debt. I told you external debt is very, very low. क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो मेनली बोरो करती है कहां से मेनली बोरो करती है? डोमेस्टिक से. और ये बोरोइंग उतनी ही होगी, मैं फिर आपको बता रहा हूं, ये बोरोइंग इतनी ही होगी टू फाइनेंस दैट फिस्कल डेफिसिट. So that's why I told you that line. Fiscal deficit reflects the total borrowing requirement of the government. Clear? So this is what the total budget profile. तो सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं लास्ट क्विकली. सो बजट साइज 50.65 लाख करोड़ का है. बजट साइज इज 50.65 लाख करोड़. अब ये 50.65 लाख करोड़ आ कहां से रहा है? What type of money from where it is going to come? One is you can come up from the tax revenue. Yes. Second is non-tax revenue. Third is capital receipt. और इसमें हमारी अर्निंग तो सिर्फ हमारा ये पोर्शन है, बट दिस पोर्शन इज मेनली बोरोइंग. और ये हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी नीड दिस मच मनी टू फाइनेंस दैट एक्सपेंडिचर. क्लियर? सो हमारा जो बजट है, आपको ये नंबर याद रखना है, द इंडियाज बजट विच इज प्रोजेक्टेड इज 50.65 लाख करोड़. Out of which direct tax is going to constitute the majority of that budget. Non-tax थोड़ा सा. Non-tax में हम लोगों ने कंसेप्ट देख लिए, इंटरेस्ट, डिविडेंड और अदर्स. बाकी छोटे छोटे मनी होते हैं. क्लियर? कैपिटल में ये हो गया नॉन डेट कैपिटल रिसीट, एंड दिस इज बोरोइंग. बोरोइंग में मैंने आपको सबसे ज्यादा कहां बोला था?
दैट इज डेट रिसीट्स, बेसिकली बोरोइंग, मतलब ये डेट रिसीट्स, और बोरोइंग में सबसे ज्यादा किधर, मार्केट बोरोइंग। हैवंट वी डिस्कस दैट? बट ये जो टैक्स रेवेन्यू है, टैक्स रेवेन्यू तो गवर्नमेंट का, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू तो ये रहा, क्लियर, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू। अब इस ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में सबसे ज्यादा जो हमारा रेवेन्यू आता है दैट इज फ्रॉम इनकम टैक्स, फॉलोड बाय जीएसटी, फॉलोड बाय कॉर्पोरेशन, बाकी ये सब छोटी छोटी चीजें। बट मैंने आपको क्या बोला था ऑलरेडी, इसी टैक्स में से भैया स्टेट का शेयर है, एक्सपेंडिचर इसी टैक्स में स्टेट का शेयर है, आप स्टेट का शेयर हटा दो, वो 22 पैसा याद है आपको, इनिशियल में स्टेट का पैसा हटा दिया। अब ये जो 50, अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस 50,65,000, दिस करोड़, हाउ इट इज गोइंग टू स्पेंड। सबसे पहला मैंने एक ट्रांसफर्स हो गया एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर वाला, एक हो गया स्कीम एक्सपेंडिचर, यस और नो, एंड देन स्कीम में मैंने आपको बताया सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हो गई, ठीक है, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हो गई। वी हैव सीन कि सबसे ज्यादा हम लोगों ने एक्सपेंडिचर कहां करते हैं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स पे, फिर ये बाकी छोटी मोटी चीजें हो गई, ठीक है। सब्सिडीज में आप ये देखो, नोटिस करो एक पॉइंट, सब्सिडीज में सबसे ज्यादा सब्सिडी कौन सी है, फूड सब्सिडी, ग्रेटर देन फर्टिलाइजर सब्सिडी, ग्रेटर देन पेट्रोलियम सब्सिडी, फूड सब्सिडी ग्रेटर देन फर्टिलाइजर, ग्रेटर देन पेट्रोलियम, क्लियर। देन स्कीम एक्सपेंडिचर में सेंट्रल स्कीम्स गई, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, कोई बात नहीं। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर आ गया यहां पे, मैंने आपको बताया था एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर इज मोनली अबाउट सैलरीज एंड ऑल। ट्रांसफर्स टू स्टेट्स आ गया, ठीक है, ट्रांसफर्स टू स्टेट्स, ये ट्रांसफर टू स्टेट प्लस स्टेट को भैया ये ट्रांसफर पहले ही हो चुका है टैक्स में से, क्योंकि वो स्टेट का शेयर है, तभी मैं उसको एक्सपेंडिचर में नहीं डाल रहा था, क्लियर। एंड दिस इज अदर कैपिटल एक्सपेंडिचर like on autonomous bodies, other central expenditure, sorry, on autonomous bodies, interest payment, you can see here, just look at it here. Interest payment is one of the largest component on the expenditure, clear। हाँ, बाकी आप बोलोगे scheme expenditure तो obviously scheme would go higher, सब schemes जोड़ दोगे तो, लेकिन otherwise interest payments will find out, देखो सब scheme देख लो, interest payment will find out to be higher। Done? So this is about the budget session. Just to announce guys that our last batch of the prelims crash course is also starting from the 9th of February. And if you want guys, let me tell you, आपको instant access मिल सकता है to the classes so that you can watch it at your own pace. You can watch it at your own pace. एंड ये बहुत ही ज्यादा, मैं आपको बता रहा हूं, हाईली रेलेवेंट कोर्स है प्रीलिम्स के लिए। दिस इज द ओनली कोर्स दैट कैन हेल्प यू इन कंप्लीटिंग योर 100% सिलेबस कवरेज, व्हिच इज फोकस्ड इन बिल्डिंग 3 लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग एट योर माइंड। व्हाट आर द 3 लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग? एक, इंफॉर्मेशन which is also required in the present time. Second, conceptual. But what distinguishes our module from the others is building your analytical understanding, not just only flooding you with full of information. It is mainly about analytical understanding. Clear? So this is what about the prelims crash courses, which you can learn it from the best team. This is what guys, our part 2. Stay tuned for more budget sessions, and that will be our part 3 is also going to come very soon. Thank you so much.